Hello everyone. In this page, the topic is vowel digraphs. So over here, we are introducing vowel digraphs. When two vowels together have a single sound, that is the long vowel sound, it is called vowel digraphs. Say aloud the long vowel sounds and their words. Do you know that AI and AY have a long A sound like train and hay? So AI and AY has a long vowel sound A. So over here you have to emphasize the child on reading the sound along with this words as well. Next is EE and EA both make the long E sound like seed and cream. I know that IGH and IE have similar sound, the long I sound like light and pie. So IGH and IE have the long vowel sound I. I have learnt long O as in OA and OW. So OA and OW sounds O like bow and boat. The last one is OO. UE, EW has long U sound like wool, glue and flew. तो यहाँ पे बच्चों को वॉवल डायग्राफ्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है. तो बच्चों को दिए गए जो साउंड है, दिए गए जो वॉवल्स है, उनका साउंड क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है. और आप उनको एम्फसाइज करिए ये समझाने में कि जब दो वॉवल एक साथ प्लेसमेंट होता है उनका, तो उनका सिंगल साउंड क्या होता है वो उनको आपको रीड करना सिखाना है. थैंक यू. Hello everyone. In this page, the child will practice vowel digraphs. Read the words and circle the digraph. So, the first word is rain. So, AI sounds A is the digraph over here. Next is tray. So, AY sounds A. After that, please emphasize the child on reading the word and identifying the vowel digraph over here, and also please see that whether they are pronouncing it correctly and उसका sound correctly वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, वो भी आपको check करना है साथ में. Next is feet. So E is the vowel digraph over here. E sounds E. Next is dream. So EA sounds E, the long vowel sound E. Next is 8. So IGH sounds I, the long vowel sound I. Next word is tie. So IE sounds I, that is the long vowel sound I. Next one is cow. So OW is the vowel sound O. Next is coat. So OA is the vowel digraph sounds O. Next is spoon. So OO is the long vowel sounds O. Next is blue. So UE sounds U, that is the long vowel sound U. तो यहाँ पे बच्चों को दिए गए वर्ड्स को रीड करना है और डायग्राफ जो है उसको एनसर्कल करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. मेक श्योर करें कि वो लोग जो डायग्राफ है उसका साउंड भी बोल रहे हैं साथ में. थैंक यू. Hello everyone. In this page,
The topic is practice long A sound. So here the child will be learning about AI words, that is the words that have AI as the vowel digraph sounds A. So the first word is train. So here the child has to read the word and then trace it over here and then write it here on their own. Next is paint. So after reading it, the child has to trace it and then write it. Please bring it to their notice that over here the letters that are marked with red color, they are the vowel digraph, and please emphasize them on reading their sound along with the word. Next is the brain. So BRAIN, they will trace it and then write it. Next is grain. So again reading, tracing and writing practice. After that again it's A words, AY words sounds A. First is hay. So the child has to read it, trace it and then write it. Tray. Again reading, tracing and writing practice. Next is bay. And the last one is day. So here please bring it to the child's notice that AY is the vowel digraph that sounds A. So here but the students have to practice the vowel sound A. तो यहाँ पे बच्चों को AI वर्ड्स और AY वर्ड्स जिसका साउंड है A उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को यहाँ पे दिए गए वर्ड्स को रीड करना है, फिर ट्रेस करना है और लिख के ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this page, the child will practice long A sound. Here, circle AI or AY in the words given below. Use green for AI and yellow for AY. So over here, the child has to encircle AY and AY sounds A in the given words. So they have to use green color to encircle AI and yellow color to encircle AY. So here the first one is day. So AY sounds A is already encircled over here. After that it's tray. So AY sounds A. The child has to circle it with yellow color. Next is pray. AY sounds A. Next crayon. AY sounds A. Main. So over here it's AI. So for AI the child has to color it using green color. Next is laid. So again over here they have to use green color to encircle it. AI sounds A. Next is said. So AI sounds A. Made. So AI sounds A. After that it's rain. So AI sounds A. And the last one is again lay. So over here the child has to encircle AY using yellow color. AY sounds A. So here the child will be completing this worksheet like this. So they have to use green color for the AI words, for the AI vowel digraph, and yellow color for the AY vowel digraph. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवेल साउंड ए की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को दिए गए वर्ड्स को रीड करना है और उसमें से AI और AY वॉवेल डायग्राफ को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो AI डायग्राफ है उसको ग्रीन कलर से एनसर्कल करना है और AY डायग्राफ को येलो कलर से एनसर्कल करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू।
Hello everyone. In this page, the topic is introducing long A sound. So here, put AI in the blanks and read the words. So over here, the child has to put AI sounds A in the blank and complete this word, and then they have to read the words. So over here, the first one is given for them. Ma, A, N. Main. Next is R, A, N is rain. Gr, A, N, grain. Dr, A, N, drain. Br, A, N, brain. After that, put AY in the blanks and read the words. One is done for the child. D, A, day. Next is B, A, bay. After that, S, A, say. And the last one is R, A, ray. तो यहाँ पे बच्चों को AI और AY जिसका साउंड है A उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को सबसे पहले यहाँ पे दिए गए ब्लैंक्स में AI को यूज करके वर्ड को कंप्लीट करना है और उसको रीड करना है। और सिमिलरली यहाँ पे नीचे जो दिया गया है उसमें उनको AY यूज करके ये वर्ड को कंप्लीट करना है, फिर उसको रीड करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। प्लीज एम्फसाइज करिए कि यहाँ पे बच्चे जो भी वर्ड्स को रीड कर रहे हैं सबसे पहले वो वॉवेल साउंड का और कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करते हुए कर रहे हैं, कि जैसे कि म, ए, न, र, ए, न। प्लीज एम्फसाइज करिएगा कि वो ऐसे ही पहले रीड कर रहे हैं और उसके बाद पूरा होल वर्ड जो है वो रीड कर रहे हैं, जैसे कि मेन, रेन, और ऐसे ही आपको उनको प्रैक्टिस करवानी है। थैंक यू। Hello everyone. In this page, the topic is practice long A sound. So, read the word and tick the matching picture. So, over here, the first word is train. Over here, AI is the long vowel sound A, and here is the train. So, the child has to put a tick mark. So first of all, they have to identify and read the word accordingly as per the sound. Next is brain. So AI is the long vowel sound A. Next is brain is given over here. So the child has to put a tick mark to the matching picture. After that, read the word and tick mark the matching picture. So the first one is tray. So AY over here is the long vowel sound A, and this is the correct picture of tray. So the child has to put a tick mark. Next is day. So AY is the vowel digraph over here that sounds A. So this is the daytime. So the child has to put a tick mark over here. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवल साउंड ए की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को दिए गए वर्ड्स को रीड करना है और सही पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसके बाजू में दिए गए सर्कल में टिक मार्क करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। इन दिस पेज द टॉपिक इज वॉवेल डायग्राफ्स लॉन्ग ई साउंड। Here we are introducing the long E sound. So the first one is E sounds E words. So the first word over here is sweet. So the child has to read the word, identify the E words and the E sound, the long E sound over here, and then they have to write it over here in the given blank box. Next is feet. So tracing and then writing practice after reading it out. Next is queen. So again reading, tracing and then writing practice. Next is tree. So reading, tracing and then writing practice. After that it's EA sounds E words.
So again the child has to read the words over here. They have to identify E, A over here, that is the letters that are marked with red color. They sound E. So seat, reading, tracing and writing practice. Next is beach. So again reading, tracing and writing practice. After that it's read. So again the same process, reading, tracing and writing. And the last one is clean. तो यहाँ पे बच्चों को ई वर्ड्स और ई ए वर्ड्स जिसका साउंड है ई, उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है. तो बच्चों को यहाँ पे दिए गए वर्ड्स को रीड करना है यहाँ पे, उसके बाद उनको ट्रेसिंग करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. मेक श्योर करें कि वो लोग जो वर्ड्स का साउंड है वो करेक्टली रीड कर रहे हैं और ऐसे ही आप उनको प्रैक्टिस करवाते रहिएगा. थैंक यू. Hello everyone. In this page the child will practice E sound. So here circle the matching word. One is done. So the first one is sweet. So they have to circle the matching word given over here, and over here E sounds E. Next is B. So over here again E sounds E. So the child has to circle the correct word B. Next is seed. So over here is the correct word seed. Next is queen. So over here is the correct word queen. So please emphasize the child on looking at the E vowels over here that has the long vowel sound E. Next is match the words. So first is P. So over here it is. After that it's seed. So over here is the word seed. Meal. So over here is the word meal. And the last is leaf. So over here is the word leaf. So please emphasize the child to look at the letters E, A over here that sounds E. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवेल साउंड ई की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. तो यहाँ पे ई और ई ए जो है उसका साउंड है ई. तो आप बच्चों को एम्फसाइज करिए कि वो करेक्टली बोल रहे हैं और करेक्ट वर्ड के साथ यहाँ पे सबसे पहले उनको सर्कल करना है मैचिंग वर्ड को, और नीचे उनको करेक्ट वर्ड के साथ मैच करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. Hello everyone. In this page the topic is practice long E sound. Fill in the blanks with E or EA and say the words. So first word is heel. So please emphasize the child on looking at the picture to identify the correct word and to identify which vowels will be used here. So first one is heel. Next is seat. Next is jeans. Next is deer. After that it's tree. And the last one is read. And please emphasize the child to look at these words E, EA, again over here EE and EA that has the long vowel sound E. तो यहाँ पे बच्चों को दिए गए पिक्चर को देखना है, उनको वर्ड आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे मिसिंग ब्लैंक जो है वहाँ पे ई और ए लिख के ये वर्ड को कंप्लीट करना है. थैंक यू. Hello everyone. In this page the topic is practice long E sound. Fill in the blank with E or EA and say the words. So first is beak. EA is used over here and the word is beak. Next is BEAM, beam. Next is BEE, sounds B.
Next is F-E-E-T, feet. So here it sounds feet. Next is N-E-A-T, neat. And last is W-E-E-D, weed. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवेल ई साउंड की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को दिए गए ब्लैंक में ई या तो ई ए लिख के ये वर्ड को कंप्लीट करना है और फिर वर्ड को रीड करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this page, the topic is vowel digraphs, long I sound. So here we are introducing long I sound. So I, E sounds I words. So the first word is pie. So the child has to read the word, trace it and then complete writing it. Next is tie. After that, it's fried. So again, reading, tracing and writing practice. And the last one is tied. So please bring it to their notice that over here I and E are the vowels that sounds I together. Next is I, G, H words. So the first one is night. So again reading, tracing and writing practice. Then it's light. After that it's right. And next is 8. So here also the letters I, G and H sounds I together. तो यहाँ पे बच्चों को वॉवेल डाइग्राफ्स के बारे में बताया गया है जिसमें लॉन्ग वॉवेल साउंड आई का यूज हो रहा है। तो बच्चों को यहाँ पे दिए गए वर्ड्स को रीड करना है, ट्रेस करना है और फिर लिख के ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this page, the child will practice long I sound. Over here, circle the IE words. IE sounds I. So first one is pie, P-I-E. So IE sounds I over here. Next is tie. So over here, T-I-E. It has IE word. So next is die. It has IE over here. Next is lie. So it also has IE sounds I. Next is see the picture and complete the word. So over here the child has to complete the given word by looking at the picture. So over here it's night, N-I-G-H-T, and I-G-H sounds I. Next is light, L-I-G-H-T. So I-G-H sounds I. Next is sight, S-I-G-H-T, and the last is 8. So over here, please bring it to their notice that I-E and I-G-H sounds I. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवेल साउंड आई की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो सबसे पहले बच्चों को दिए गए वर्ड्स में से आई वर्ड्स कौन से हैं? तो आई वर्ड्स को उनको एनसर्कल करना है और यहाँ पे उनको पिक्चर देख के वर्ड को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this page, the child will practice long I sound. Circle the IGH in the words with orange color and read the words. So over here the child has to circle the IGH in the given words and they have to read the words. So here IGH sounds I. So the word is bright. Next is over here IGH sounds I and the word is light. Next
IGH sounds I and the word is night. Again, IGH sounds I and the word is fight. After that, circle IE in the words with green color. So over here, the child has to circle IE with green color. So IE sounds I and the word is diet. IE sounds I and the word is tie. IE sounds I and the word is pie. Next is look at the picture and write the word. So here it's 8. So the child has to write the word 8 and next is tie. So the child has to write the word tie. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवेल साउंड आई की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. तो उनको दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. Hello everyone. In this page, the child will practice long vowel sound I. Write IE in the blanks and read the words. So P-I-E, pie, T-I-E, tie, L-I-E, lie. So over here, IE sounds I. Fill IGH in the given box and read the word. So over here, S-I-G-H-T, sight. L-I-G-H-T, light. R-I-G-H-T, right. B-R-I-G-H-T, bright. So over here, IGH sounds I. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वोवेल साउंड आई की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. तो सबसे पहले उनको दिए गए बॉक्स में आई को लिख के वर्ड्स को रीड करना है और उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में उनको IGH लिखना है बॉक्स में और फिर वर्ड्स को रीड करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. हेलो एवरीवन. In this page, the topic is vowel digraphs, long O sound. Introducing long O sound. OA sounds O words. So over here, the child has to read the word over here and then they have to trace it and then write it. So the first word over here is goat. So first they have to read it, trace it and then write it. Next is boat. So again reading, tracing and writing. Coat. And the last one is float. So over here please bring it to the notice that the letters O and A together make the long vowel sound O. After that, it's OW words. OW sounds O. So over here, they have to read the given words, then trace it and then write it. So first one is bow. Tracing and writing. After that, it's glow. So first they have to read the word, then trace it and then write it. Next is crow. And the last one is blow. So over here also, please bring it to the child's notice that over here, the letters O and W together make the long vowel sound O. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वोवेल साउंड ओ का इंट्रोडक्शन भी दिया गया है और उसके रिलेटेड वर्ड्स भी दिए गए हैं जो बच्चों को रीड करना है, ट्रेस करना है और फिर लिख के ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. हेलो एवरीवन. In this page, the topic is practice long O sound. Join the picture to the word. So the first picture is of crow. So this is the correct word. Next is boat. After that, it's bow. Next is coat.
and the last one is blow. So please bring it to the child's notice that over here the letters OW and OA, they make long vowel sound O, and please make sure that they are pronouncing the words correctly over here. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवल साउंड ओ की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. बच्चों को यहाँ पे दिए गए पिक्चर को करेक्ट वर्ड के साथ ज्वाइन करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. Hello everyone. In this page, the topic is practice long O sound. Over here, fill in the blanks with OW and read the words. Observe the two different sounds of OW. So first one is HOW, how. Next is BLOW, blow. Next is BOW, bow. Next is CROWN, crown. After that it's COW, cow. Next is CLOWN, clown. After that it's OWL, owl. Next is THROW, throw. So here please bring it to the child's notice that how two different words like how and blow. So OW is the sound and we can pronounce it differently while using it along with different words. It has different sound. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवल साउंड ओ की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. तो यहाँ पे बच्चों को दिए गए ब्लैंक्स में OW लिखना है, वर्ड्स को रीड करना है और ऑब्जर्व करना है कि OW को प्लेस करने के बाद दो डिफरेंट वर्ड का कैसे साउंड बोला जाता है और उसको कैसे रीड करते हैं. थैंक यू. Hello everyone. In this page, the topic is practice long O sound. Over here, circle OA in the given set of words and one is done for the child. So in the second row, the first word is no, coat and meal. So over here is the word OA sounds O and the word is coat. After that, in the third row, first is lock, load and knot. So over here is OA sounds O and the word is load. After that it's goat. So OA sounds O and the word is goat. Next is boat. So over here OA sounds O and the word is boat. तो यहाँ पे बच्चों को OA को सर्कल करना है दिए गए वर्ड्स में से, वर्ड्स को करेक्टली रीड करना है करेक्ट साउंड के साथ और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. Hello everyone. In this page the topic is vowel digraphs, long vowel sound U. Over here we are introducing long U sound. So the first word is EW, words sounds U. So the first word is flew. So the child has to read the word and then trace it and write it over here. Next is dew. So again the same process they have to follow. Please make sure that they are reading the words correctly over here. Next is few. Also please emphasize them to look at the letters E and W that together make long vowel sound U. And the last one is chew. So again reading, tracing and writing practice. After that UE words. So the first word is over here blue. So again the child has to read it, trace it and then write it. Next is glue. After that it's clue. And the last one is fuel.
So again over here, please make sure that the child is reading the words correctly with the correct sound. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवल साउंड यू के वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. तो सबसे पहले बच्चों को दिए गए वर्ड्स को रीड करना है, फिर ट्रेस करना है और फिर लिख के ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. Hello everyone. In this page, the topic over here is practice long U sound. Complete the words on the tortoise shell. Read aloud the words. So over here, EW sounds U is given over here, and over here the child has to write EW to complete the word, and then they have to read the words aloud. So first is FLEW flew. Next is DREW drew. After that GREW grew. Over here UE is given, UE sounds U. So first of all over here CLUE clue, BLUE blue, and next is GLUE glue. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवल साउंड यू की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. बच्चों को यहाँ पे दिए गए जो वर्ड्स है उसमें ई डब्ल्यू और यू ई लिख के वर्ड्स को कंप्लीट करना है और फिर वो वर्ड्स को रीड करना है. थैंक यू. हेलो एवरीवन. इन दिस पेज वी आर इंट्रोड्यूसिंग द लॉन्ग वॉवल यू साउंड. सो ओवर हियर the child will be learning about OO words. OO sounds U. So the first word is over here book. So the child has to read the word, trace it and then write it on their own. Next is hook. After that it's spoon. And the last one is pool. After that, see the picture and circle the correct word. So over here it's spoon. So the child has to circle the correct word. Here it's hook. So here is the word hook. And the next is cool. Ice is cool. And please bring it to the child's notice that over here OO, even here as well, when they are placed together it sounds U. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवल साउंड यू की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. तो यहाँ पे दिए गए जो वर्ड्स है यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं ओ वर्ड्स के बारे में. ओ जिसका साउंड होता है यू, तो वो वर्ड्स उनको रीड करना है, ट्रेस करना है और फिर लिखना है. यहाँ पे नीचे दिए गए पिक्चर को बच्चों को सर्कल करना है करेक्ट पिक्चर को आइडेंटिफाई करके. थैंक यू. हेलो एवरीवन. In this page, the topic is practice long vowel sound U. Circle the word for the given picture. So the first one is moon. So the child has to encircle moon. So here first one is done for them to refer. Next is broom. After that it's hook. Next is a spoon. And the last one is boot. So here please bring it to the child's notice that over here OO when they are placed together it sounds U, that is moon, broom, hook, moon, foot, spoon, boot. So these all words they are having double O vowel which sounds U, that is room, groom, look. Please emphasize them to read all the given words over here and then let them circle the correct word according to the given picture. Thank you. तो यहाँ पे बच्चों को लॉन्ग वॉवल साउंड यू की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. प्लीज एम्फसाइज करिए कि बच्चे यहाँ पे दिए गए सारे वर्ड्स को रीड कर रहे हैं ताकि वो करेक्ट साउंड के साथ रीड करे और फिर यहाँ पे दिए गए जो पिक्चर है उनको पिक्चर से आइडेंटिफाई करना है करेक्ट वर्ड और फिर उसको एनसर्कल करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू.
Hello everyone. In this page, the topic is revise vowel digraphs. Add and complete the following equations. Read aloud the words. So the first one is train, train. Next is layer, layer. Steel, steel. Light, light. Blow, blow. Hook, hook. Blue, blue. Steel, steel. तो यहाँ पे बच्चों को वॉवल डायग्राफ्स को रिवाइज करना है। तो यहाँ पे दिए गए इक्वेशंस को उनको रीड करना है, वर्ड को कंप्लीट करना है और फिर वर्ड्स को भी वापस से रीड करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, in this page the child will revise vowel digraphs. Here write the correct words and complete the word wheel. One is done for the child to refer, and here are the helping words given. So the first is long A sound. So for that one word is already given over here, which is brain. So after that the next word would be pray. P-R-A-Y. Here A-Y sounds A. After that long vowel E sound. So over here are the words heel. H-E-E-L. Over here E-E has the long vowel sound E, and beak. So B-E-A-K. Over here E-K has the long vowel sound E. After that it's long vowel sound I. So the first one over here is tie, T-I-E. So over here I-E sounds I. After that it's light. So L-I-G-H-T. Over here I-G-H sounds I. After that it's long vowel sound O. So the first one is blow. Over here O-W sounds O. And the next is float. So F-L-O-A-T. Float. Over here O-A sounds O. Next is long vowel sound U. So the first is blue. Over here E-W sounds U. And next is moon. So M-O-O-N. Over here O-O sounds U. तो यहाँ पे बच्चों को वॉवेल डायग्राफ्स का रिवीजन करवाया जा रहा है। तो बच्चों को यहाँ पे दिए गए वर्ड्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे वर्ड्स को उनको ये व्हील में लिखना है दिए गए वॉवेल साउंड को आइडेंटिफाई करने के बाद। अगर वो लोग भूल गए हैं तो आप उनको एम्फेसाइज भी करवा सकते हैं, आप उनको रिवाइज करवा सकते हैं ये चीज़ के लिए कि आप उनको रिवाइज करवाए कि लॉन्ग वॉवेल साउंड ए में कौन से डायग्राफ्स थे, लॉन्ग वॉवेल साउंड आई में कौन से डायग्राफ्स थे। ऐसे करके आप उनको रिवाइज करवा के भी ये वर्कशीट को कंप्लीट करवा सकते हैं। थैंक यू।